मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं ही एक जुझारू आदमी हूँ जो बहुत कुछ करता हूँ, फिर मैंने इसको देखा, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है, 4 बजे तो रात ही होती है ये क्या। एंड लास्ट 2 days तो हम लोग 6 degrees रात भर शूट था, गाने का शूट था, एंड बिकॉज शी वॉज वेयरिंग हर रेड कलर का शादी वाला घाघरा, तो मतलब वो फ्रीज हो रही। My team refused to come out of the vanity. They refused. My team just did not walk out. They were like, touch up कर रहे हैं vanity के बाद, okay bye, good luck. I said, how mean? मतलब hair, makeup, stylist, everybody 4-5 लोग वो अंदर ही बैठे हैं ऐसे। Well, only on TellyChakkar with me, Vishakha Pandit. मेरे साथ आज है cast of Chhatriwali, and rather not on the cast but the mind behind the itself. Guys, firstly, welcome back on TellyChakkar. Rakul, Sumeet, and Tejas sir yourself. I would say trailer देख लिया है, and मेरी जो expectation है वो काफी high, but still I think I would let you guys tell the audience what is the story, or maybe what is the mind behind the story itself. I think let the mind Please. start from. So Chhatriwali, if you read the tagline says हमारी optional नहीं compulsory है। तो हमारी फिल्म जो है वो उसी चीज के बारे में बात कर रही है कि सेक्स एजुकेशन ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। एंड इन अ वेरी फन वे वी आर ट्राइंग टू टेल कि क्या ज़रूरत है आज की, कैसे हम इस सब्जेक्ट को अप्रोच करें और अनअपोलोजेटिक रहे इस बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। Yes. तो बस छतरीवाली इसी के बारे में है। Well, Rakul, I would love to know from you, जब आपने सुना छतरीवाली के बारे में, a lot of times actors के अंदर कोई limitation नहीं होती, actors are out there to express how they feel about topics, but then as an audience जब आपको ये स्क्रिप्ट सुनाई गई, आपका रिएक्शन क्या था अपने किरदार के बारे में, about the whole entire script? No, I really thought, कई बार आपको चीजें पता होती हैं, आपको मालूम है, as a person you are evolved enough to know what is the right and wrong. लेकिन when it comes to you in form of a script and you realize that it is actually such an important conversation to have, it is such an important topic to talk about, because so many people, so many women are not even aware if they have the right to have a choice. Yes. They are not even aware if they have the right to have a choice. Forget having a choice, So our main motto was to create awareness, and when I read the script, for me, I really connected with the thought of it. It's very close to my heart because I don't think a lot of films have spoken about women's health, or we are talking about unsafe sex and the problems that come along with it. But then, what are those problems we've never spoken about, and how it affects the women, as in how many abortions and miscarriages can a woman really handle? Why is it that she has to deal with the brunt of the doings, of the wrongdoings rather? So yeah, a lot of these sensitive topics, and I felt that this is a great film because the beauty of it is that it's not preachy. It's an entertaining film that I can watch with my parents. It's not one scene in the film that is cringe-worthy. It is a family film which, by the way, through the story of Sanya's character and Rishi's character, you will know what is the right way to be. It's not preachy. It's not. ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है हमने लोगों को समझाने के लिए। ये उन दो लोगों की कहानी है, ये सान्या की कहानी है, that how through her journey in life she stumbles upon the necessity to talk about this topic, and how she chooses sex education as a motto in her life to educate people around her, and I feel that really connected with me. And I would say that sex education is something जो शायद is something so mandate that you should actually have it, like not like as you said in the movie also कि अगर वो पढ़ना एक mandate है तो question क्यों उसका optional है? Correct. I totally agree with that thing because I still remember when we were in school or something, that was a very basic thing कि हाँ चलो आएगा तो हमको female diagram बना लेंगे, male diagram बनाने की जरूरत ही क्या है? So that's I think very honest to what you guys are talking about. And सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में ये ऑप्शन नहीं है, लाइफ में सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप एडुकेटेड हो या नहीं हो। तो फिर आप क्यों एडुकेटेड नहीं होना चाहिए? एडुकेशन क्यों ऑप्शनल है? I totally agree, but then I think I should ask Sumit first because मैं सुमित को साल खत्म होने में मिली थी और अब नए साल की शुरुआत में मिल रही हूँ, and सुमित का एक आंसर बहुत ही कॉमन था, I want to do something जो मेरी लिमिट्स को टेस्ट करे. Sumit, has this tested your limits? Yeah, of course, और ये कहानी भी जो है वो एक ऐसे मुद्दे पे है जो सेंसिटिव है, जिसको लेकर लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं बात करते समय, और इसलिए इस किस्म की कहानी बनाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपके दिमाग में वो थॉट एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बात कहने चाह रहे हो। अगर आप इस बात को लेकर खुद नर्वस हो या आपके मन में कोई संकोच है तो देखने वाला भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो
इसलिए इस कहानी को बनाना मुश्किल था, और इसीलिए ये जब हम बना रहे थे तो हमें मज़ा आया बहुत, क्योंकि जो इंटेंशन था वो किसी को ट्रिटलेट करना या कोई सेंसेशनल चीज़ बनाना नहीं था। इंटेंशन था कि एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर फिल्म बनाए जिसका मुद्दा ये है ना, और कैसे इस मुद्दे को हम सेंसिटिवली इससे डील करें, ऐसा बनाए कि जिससे लोगों तक बात पहुंचे पर वो अनकंफर्टेबल ना हो, उनको देखने में मजा आए, और हो सके तो उन्हें 2 बात भी पता चल जाए जो उन्हें नहीं पता थी। आप अपने मूवी के माध्यम से और आप अपने किरदारों के माध्यम से अक्सर ऑडियंस के ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ते हैं जहां उनको लगता है कि यस, बिकॉज आप लोगों के टॉपिक बहुत ही बिलीवेबल है। जो ये चर्चा हम कर रहे हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोग आज ही से प्रीच नहीं कर रहे हैं। इट्स एक्चुअली बिलीवेबल एंड इट इज आउट देयर दैट वी शुड टॉक अबाउट। बट हैज इट एवर हैपेंड दैट एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस हैज रीच्ड आउट एंड सेड दैट अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है? Yes, I had it after Dr. G. A lot of people actually, on my Twitter, on the feed or on social media, I saw so many messages, and there was this one message that I remember. She said that thank you so much for making a film like this. After 8 years of marriage, I can finally tell my husband, I can have a conversation with my husband, because उसमें वो सीन होता है ना, ये गलत जगह घुस जाते हैं, और वो this is reality, this from government hospitals and all we had figured out. So this was a social media message that thank you to you guys that I can speak about things comfortably to my husband, and it's so important. मतलब it's basic, it's not, see, we are not like is it tantalizing or titillating or selling the film on that point. It is normal and it's part of human body and evolution and your existence. So why make it a taboo? I agree, but मैं तेज आपसे जानना चाहूँगी, जब आप इस प्रकार के topics चुनते हैं, and when you think about okay, this is the kind of thing it should flow by, or maybe these are the actors, how do you picturize the movie? And whatever you picturize about this one, जब वो खत्म हुई the final product जो हम बहुत जल्द देखेंगे, do you think that the actors sitting here have they passed the test? Have they fulfilled? No, we flunked it. But he will have to lie right now. We can't say that because audience बताएगी हमें. You have to tell audience. I can't. मैंने जो किया है वो कर दिया, उन्होंने जो करना है उन्होंने कर दिया. अब वो audience के हाथ में. But I want to tell you something very जो मुझे bother कर रहा था बहुत time से, कि actually this is a story. It's a situational, humorous drama story. Yes. Subject happens to be this. Yes. We want to tell a point through that. But the whole idea of making this film is not to make a sensationalizing story, but we are telling a very very humorous story जो शायद कोई और भी किसी और तरीके से बताते हैं. हमारे इसमें प्लस पॉइंट है कि हम लोग एक मुद्दे को भी इसमें जोड़ रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ होल, इफ यू लुक एट दिस एज अ पिक्चर, एज अ फिल्म, वी आर ट्राइंग टू टेल अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग स्टोरी. एंड सिचुएशंस भी ऐसी है उसमें, हर कैरेक्टर जो हम लोग आपस में हमारे आसपास देखते हैं वही चीजें आपको यहाँ पे भी दिखेगी. सो इट्स वेरी रिलेटेबल. एंड द इशू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो तो इशू सबके घर में है, कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं करता है. वी होप एंड आई पर्सनली बिलीव दैट आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म people will start talking about it, and if that happens then I think we are successful. There are a lot of actors who actually choose characters उनके लिए popularity लेकर आए, मतलब वो ऐसे realistic topics पे चर्चा नहीं करेंगे, but they would want to choose the characters that would actually not even connect with masses, but then will be quite a big budgeted film and maybe box office पे hit होगा. So what is the kind of projects that actually excites you guys, and what is it that you guys actually see that okay, this is where it's gonna be testing our limits, and but you should be trying that one? It has to be a bit of both. In order for people to watch this, I have to do that. Yeah. And it's not that I don't enjoy that. Like my pedigree of growing up has been the Bollywood Nach Gana and the films. Indeed. And the larger than life. We've loved it all. And we've loved it, and I've been doing those films, and whether it was my journey in the Telugu films or even here, whether it's De De Pyar De or Katputli or the kind, they are those kind of films. There's another rom-com that I'm shooting for, which is that kind. But I feel that as an actor, you need to, if you have an option to tell different stories, you should experiment with telling different stories. Do a little bit of glamorous Nach Gana, then do a little hard hitting, do something that is maybe a biopic inspirational, or do something that is also subject driven. As an actor, our job is to showcase our versatility. Then why should we lock ourselves into a certain box and say this is the only kind of cinema I'm going to do? Actor matlab acting. But then how does it feel when आपकी किसी एक किरदार को पकड़ के audience आपको बोलती, oh, is that, like, they don't recognize you by your name, but they recognize you by your characters. And I of course hope they that still recognize you by your name.
I still hope that but that's amazing when they remember your characters. Exactly. Of course, that's amazing. Okay, what about you, Sumit? Like, what do you see that? Like, for you selecting a project, is it like, okay, I have to see what is leaving a mark on the audience, or you have to see like, oh, will this be a box office hit or not? Because obviously that is not in your hands. That's actually the audience ke haath mein. But still, what is it? How it look back? Yeah, like you said, I mean, that's not something that I can decide or predict. I wish I could. But what I can predict is that is it different from something that I've done in my previous work. वो जरूर मैं देखता हूँ कि जो पहले कर चुका हूँ वो दोबारा करने में मुझे मजा नहीं आता. I enjoy working with different people. I have this thing where I really look forward to working with different directors and actors and collaborating with different artists in general, because that's something that enriches me and I have fun doing that. Okay, in that means I think I should ask all three of you. First impressions एक दूसरे के बारे में क्या था? कोई झूठ बोलना पड़ेगा. झूठ बोल दीजिए, मेरा करियर बन जाएगा. No, I'll tell you. First impression we met regarding the script only. जो मैंने पढ़ी और फिर मुझे कुछ चीजें जाननी थी उनसे कि वो कैसे देखते हैं फिल्म को, और मुझे उनसे मिलके बहुत मजा आया. मुझे लगा कि he has amazing clarity as to what he wants to do with the film. उनके मन में कोई संकोच या confusion नहीं था कि वो क्या फिल्म बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और वो जानकर बड़ी खुशी होती है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम एक सही जगह पर जा रहे हैं, ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ काम करके मजा आएगा. और हमने और भी दुनिया की बहुत बातें की. मुझे बातें करने में बड़ा मजा आता है. तो फिल्म के अलावा भी हमने दुनिया जान की, यहाँ वहाँ की बातें की, चाय पी. मुझे लगा ये सही है, इनके साथ काम करते. शी इज वेरी वेरी फोकस्ड एंड शी इज वेरी सिक्योर एज एन एक्टर. शी इज नॉट and that only comes when you are sure about what you are capable of. Very hard working. वो सुबह 4-4:30 बजे उठ के वो जिम जाती हैं, एक्सरसाइज भी कर रही हैं अभी. हाँ, मुझे पहले ऐसा लगता था कि मैं ही एक जुझारू आदमी हूँ जो बहुत कुछ करता हूँ. फिर मैंने इसको देखा, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है. 4 बजे तो रात ही होती है ये क्या. But I did join her for a few of those 4:30 a.m. sessions. First impression when I met him was that he has a lot of clarity and he loves his subject. He's very passionate as somebody who believes in the subject. But I'll say that the true impression is always formed when you really get to shoot. And for me that was very very nice, and I remember telling him after 2-3 days of shoot that even because if we were shooting outdoors, it was a start to finish 37 day schedule. तो जब आप completely out of station होते हो, तो then you are spending more time with the entire unit, and it's not an easy film to finish in 37 days. So it used to be packed days. हाँ, सुबह से लेके रात तक हम लोग shoot कर रहे होते थे, but not a single day, and I'm not just saying this, we did not feel the pressure. The prep was amazing, and you can always tell of a director's strength from how the ADs around and people on set are aware of what's happening, because a lot of times ADs को भी नहीं पता होता है क्या हो रहा है. So I remember telling him that your AD team is so good, remember? And I said they're so good, they're prompt, they're on point, and that always happens when the director or the captain of the ship really knows how to sail his ship. So I think that is quality was bang on. I'd seen a lot of work of Sumit, and of course he's a fantastic actor, and when I met him first I was like, he's so simple and so like he's an artist in true sense, if I can say that, who loves his job, who likes to come and create and be fuss free and be chilling and working and like no fuss. And that's amazing, because when you are making a film, I think the right energy is very important, क्योंकि आप 40 दिन मतलब almost 1 महीने से ऊपर उन्हीं लोगों के साथ हो, so it's so important to have the right energy, which but then was it pleasing to torture him in the morning 4:30 a.m. I didn't torture him, he came out of choice. Yeah, I came out of complex. He didn't out of choice, he just hated you. Complex था. Okay, let me ask the captain of the ship. बीच में जब scenes के बीच में breaks हल्की सी मिल जाती थी, तब उनके साथ का वो माहौल कैसा था set पर? Actually, I'll begin with the start, because वो बहुत मेरे साथ सबके साथ first time हुआ. हम लोग मिले Zoom पे, मैं और रकुल. सुमित और क्या सारा सब कुछ जो था वो Zoom पे हुआ था. First was Zoom. सुमित से तो मैं personally मिला था बाद में, but इनसे तो मैं Zoom पे मिला, इनसे नरेशन भी Zoom पे करवाई, एंड उन्होंने हाँ भी स्क्रिप्ट के लिए Zoom पे कोविड था तब. ठीक है, तो कोविड का चक्कर चल रहा था, एंड माय पर्सनालिटी इज नॉट समबडी हु विल गो ऑल आउट एंड से कि अरे मैं ऐसा हूँ फिर मैं दोस्त बन, मेरे से नहीं होता है वो.
तो मुझे हमेशा से लगता था कि ओके एक डिस्टेंस है, और अभी तो जूम की वजह से वो मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। तो कैसे बनाए हम लोग अपना एक कनेक्शन, क्योंकि एक आर्टिस्ट और डायरेक्टर के बीच में एक सिम्फनी होनी बहुत जरूरी होती है। बट व्हेन शी केम ऑन टू द सेट, एंड उसके पहले भी प्रेप में फिर हमने ऑफ कोर्स जूम थोड़ा ये अपना कम हो गया पैंडेमिक, तब रियलाइज हुआ कि अरे शी इज अ थरो प्रोफेशनल, शी अंडरस्टैंड्स एंड शी प्रेप्स हरसेल्फ इनटू हर कैरेक्टर, शी नोज हर लाइंस। जब शूट पे आई तो आपका काम आधे से भी कम हो जाता है। Yes. कि आपको कुछ प्रॉम्प्ट नहीं करना है, अरे ये आप भूल गए हो, इसमें ये डालना है, ये नहीं है। एक बार जब डिस्कशन हो जाता है तो शी कुड पिक इट अप, कैरी इट थ्रू द एंटायर शूट। एंड डिफिकल्ट टाइम्स था, ऐसा नहीं कि हम लोग इजी काम कर रहे थे। आउटडोर्स में जब होता है तो हमेशा डिफिकल्ट होता है। एंड लास्ट 2 days तो हम लोग 6 degrees रात भर शूट था, गाने का शूट था। एंड बिकॉज शी वॉज वेयरिंग हर रेड कलर का शादी वाला घाघरा, तो मतलब वो फ्रीज हो गई। My team refused to come out of the vanity. They refused. My team just did not walk out. They were like touch up कर रहे हैं vanity के बाद, okay bye, good luck. I said how mean, मतलब hair, makeup, stylist, everybody 4-5 लोग वो अंदर ही बैठे हैं ऐसे, except for my assistant of बेचारे, and they were in jackets and I was in a small blouse. तो वो एक चक्कर मुझे लगा कि यार एक एक्टर को अगर परफॉर्म करना है तो आपको कोक्स नहीं करना पड़ रहा है कि भाई तेरा शॉट है, दे तेरी ही फिल्म है। नहीं, शी स्टार्टेड ओनिंग द फिल्म, व्हिच हेल्प्ड मी अ लॉट। अबाउट सुमित, ही केम अक्रॉस, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ही केम अक्रॉस एज अ बिग ब्रदर। आई कुड गो अप टू हिम एंड से कि भाई ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप कर लीजिए, एंड ही हैज ऑलवेज ग्रेस्ड मी विथ अ स्माइल कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इट वाज वेरी इजी राइट एट द बिगिनिंग। प्रॉबेबली इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं उनसे पर्सनली फर्स्ट टाइम मिला, और तब हमारी सच में बहुत लंबी बात हुई, इधर उधर की बात हुई। वी ऑल्सो हैव सम कॉमन इंटरेस्ट, देन वी ऑल्सो वी जेल्ड ऑन टू खाना, which is a common interest. नहीं, not Kashmiri. Because I always target so much. नहीं, we actually talked about cricket. We played cricket together later on. So क्या होता है कि हर एक का अपना अपना एक strength होता है। उस हिसाब से मुझे लगा कि to work with people without any apprehension कि भाई इनके पास जाके कुछ बोलना है तो मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एक ऑरा होता है जो शुरू होता है 15 फीट से। जब एक स्टार होता है बहुत बड़ा, जब आप उनके पास जा ही नहीं सकते हो तो क्या फायदा उस स्टारडम का अगर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आई एम सेइंग हियर आई फेल्ट एट होम। ऑडियंस का फीडबैक काफी हद तक मायने होता है एक्टर्स के लिए, but then there are times when they can actually be very hard hitting. They can be very honest also with their feedback. But as actors, as a director, आप लोगों के लिए ऑडियंस का फीडबैक कितना मायने रखता है? मतलब उन्हीं के लिए फिल्म बना रहे हैं, उनको खुश करने के लिए बना रहे हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं। एंड आई थिंक as long as the criticism, see if it's a good feedback, we are all very obviously elated and happy. And if it is criticism and if it's constructive criticism, then I'm sure we all take it in the right stride and try to improve on ourselves or on the kind of films that you choose, because ultimately audience is God for us. They are the decision makers, they make or break you, and we make films for them, so of course it's very important. Yeah, absolutely. I mean, and I don't identify with films जो लोगों को समझ में नहीं आती. I don't understand those stories. Rather, I can't relate to them. You can't judge the audience and say कि उनको समझ में नहीं आई, हमने तो कुछ बहुत ही गहरी बात कही है, तो फिर डेफिनेटली हमारी बात कहने में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। उनको समझ नहीं आई। उनको समझ में आना चाहिए ना। Indeed. What about you? सर वो आप मतलब मैं इनसे बोलता हूँ कि वो जो ऑडियंस होती है वो हमसे 5 गुना ज्यादा बहुत समझदार है, बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने मूवी में ऐसे कुछ छोटे-छोटे nuances डाले हैं and you are just hoping to see कि अच्छा who will understand that, and audience have understood those pointers? Of course they understand. Yeah. You've had those moments. Yeah. They always get it, and the thing is that everybody looks for a different thing. Yes. When you look at a painting, all 4 of us will get affected by something else in the same painting. Yes. हम सारे लोग एक ही गाना सुनते हैं, पसंद करते हैं, हिट गाना होता है, लेकिन हमको उस गाने में एक अलग-अलग चीजें होती है जो छूती हैं. It's the same case with films or shows or anything. Perfect. Well, guys, आखिरी में सिर्फ ये बता दीजिए 20 जनवरी what should the fans expect out of Chhatriwali, because मैं तो बैठ के देखने वाली हूँ. I am super excited to see how this movie is going to be changing the mindset of people. What if tell the fans at the end? Oh, well, I would just like to say that please do not mistake it for anything but a family entertainer. It is a full family entertainer, so please watch it with your kids and your families, and optional नहीं, compulsory है.
20th January से मैंने आपकी लाइन ले ली. Exactly, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ मेरा अभी. नंबर कब आएगा? मेरा नंबर नहीं नहीं, मैं क्या बोलूँ अभी, खत्म हो गया. नहीं से या कोई copy नहीं, paste? कोई बात नहीं. हम मराठी में बोलते हैं ममा, मतलब मैं आपके साथ हूँ. Mama. Mama, you wanna add something? Mama. Mama. We all want you to be mama. Like हमारे साथ. Perfect. Well, guys, thank you so much for joining me here on TellyChakkar. I really hope the best for you guys. I hope Thank जो भी you. next project आप लोग sign करें, that would also be as exceptional as this one. Well, this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. Don't forget to tune in on Z5 and also watch the movie and give these guys feedback because they want your feedback because that's what helps them ahead. Well, thank you so much. Thank you so Thank much. you so much. Hi, this is Rakul. Hi, this is Sumeet Vyas. Hi, this is Tejas Deoskar. And you're watching us on TellyChakkar. Know all about the Telly world by subscribing to TellyChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.